हाय सो लेट्स लुक इनटू द रिजल्ट्स जो नेक्स्ट वीक आने वाली है. सो आरईसी लिमिटेड एक रिजल्ट अपनी देने वाली है. राइट नाउ इट सीम्स लाइक 110 इज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ लेवल और अभी ये 115 उसी लेवल्स पे है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी. एक्साइड इंडस्ट्रीज इट वाज ये सुबह में बहुत अच्छी रन दी और इट वाज वन ऑफ द टॉप gainers, and then eventually a lot of selling came in, and from there you can see it was not just of a move, but at least you should be there was an high low sort of pattern. Going forward, definitely 190 and 200 are definitely strong resistances for Exide Industries. SRF is trading just like every other chemical sector stock near its 52-week low. This is a sort of a very good structure for breakdown. So going forward, ये 2150 के ऊपर और स्पेशली 2250 ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आते हैं. और अगर ये 2100 को इजीली ब्रीच करके का ट्रेड कर रही है, देन गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी मोर वीकनेस इन एसआरएफ. लॉरसलैब्स इसकी भी रिजल्ट आने वाली है, एंड बिफोर द रिजल्ट इज ट्राइंग टू जस्ट फॉर्म सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 340, बट डेफिनेटली दिस लुक्स अ वीक स्ट्रक्चर. गेल हमने डिस्कस किया था इन दिनों, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी इट हैज नाउ कम डाउन टू द लेवल्स ऑफ 98. गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना है कि ये किस तरह से करती है. इन जनरल दिस लुक्स लाइक अ चैनल ट्रेड. अगर चैनल ब्रेकआउट नहीं होती है विच कम्स नियर द लेवल्स ऑफ 96, जब तक होल्ड करती है, देन गेल मे बी एबल टू give us some good move in the near future. बजाज फिनसर्व 1300 लेवल पे आ गई है, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर इसकी रिजल्ट अगर अच्छे इट विल डिपेंड ऑन बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बाद वो किस तरह से मूव करती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी वुड बी एबल टू सी एंड कॉम्प्रिहेंड बजाज फिनसर्व. बट डेफिनेटली 1300 सीम्स लाइक अ गुड सॉर्ट ऑफ रीजन, और शायद मैं अपना कुछ फंड यहाँ पे एलोकेट करूँ, बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज व्हेन वी ओपन अप ऑन नेक्स्ट मंडे. टेक महिंद्रा इसकी रिजल्ट आने वाली है, एंड बिफोर द रिजल्ट इट फॉर्म्ड डोजी ऑन दिस पर्टिकुलर डे. वी सेड दिस इज अ इंटरेस्टिंग ट्रेड विच इज गोइंग टू कम अप, और यही हुआ. 1060 से ये 1020 40 पॉइंट की 3-4% की एक मूव इजीली मिल गई हमें 2-3 दिन में, और ये हमने डिस्कस किया था ऑन दिस पर्टिकुलर डे विच इज़ ऑन 24th नाइट को, कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर बनाई है. एंड सो गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली टेक महिंद्रा विल बी इन आवर फोकस, एंड जस्ट हाउ द IT कंपनीज आर रिएक्टिंग आफ्टर द रिजल्ट. सो हम भी टेक महिंद्रा में उसी तरह से अपना वो करेंगे, पोजीशन लेंगे. पंजाब नेशनल बैंक, बैंकिंग सेक्टर, PSU सेक्टर सब वीक है, एज अ रिजल्ट of which this 50 seems like a very easy sort of target जो easily breach हो सकती है on a closing basis. So definitely keep an eye for it, or it just depends on how the market is going to react on Monday. L&T हमने इन दिनों में हमने डिस्कस किया था कि ये L&T को हमेशा बजट के पहले बहुत चरा बरा के बोलते हैं, but it never actually gives any meaningful return. ये बजट का एक हाइप मीडिया क्रिएट करती है, एंड दिस हैज ऑलवेज बीन द केस, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम. सो हियर गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस लेवल्स ऑफ 2100 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये 2100 को होल्ड कर पाती है तो अच्छा है, वरना डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू करेक्ट. एंड आई थिंक सिंस दिस इज जस्ट 1 or 2 days इसकी रिजल्ट आने वाली है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मे बी ये बजट के पहले ये इतना कुछ अच्छी मूव उतनी ना दे. BPCL इसमें भी एक अच्छी फ्लैग पैटर्न बनी थी, अब फ्लैग पैटर्न की क्लोजिंग हुई है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ द नेक्स्ट कैंडल विल बी. अगर नेक्स्ट कैंडल 345 या 350 इस लेवल्स 345 लेवल्स को अगर इसको टच करती है, एंड इफ इट इज एबल टू go and give a closing above 350, then it would be a good good directional trade which can take it more towards the levels of 370. लेकिन BPCL में जब तक वो नहीं आती है, the chances of that is still going to get stuck in a box between the levels of 325 and 350. UPL ये भी अच्छी मूव देने की कोशिश कर रही है, बट इन जनरल 760 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. जब तक ये 760 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, देयर इज नथिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, बट एटलीस्ट इट लुक्स दैट UPL शुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स जो आपके रेडर पे होनी चाहिए, स्पेशली इसकी रिजल्ट जब 31st को आ रही है. सन फार्मा की भी रिजल्ट 31st को आ रही है. सो सन फार्मा इज ऑल्सो, यू कैन सी देयर वाज अ ह्यूज स्ट्रक्चरल डैमेज ऑन दीज पर्टिकुलर डेज, बट सन फार्मा हैज रिकवर्ड दिस इवेंचुअली, और अभी ये 1050 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, देन गोइंग फॉरवर्ड SUNPHARMA में भी अच्छी मूव आ सकती है. CHOLAFIN it's stuck and it's making high lows and
sorry, lower lows and lower highs, and so basically previously it went towards the levels of 767, next time it went towards the levels of 760, फिर 750, इस तरह से ये धीरे धीरे करके ये बना रही है, and it's also making high lows. So going forward अभी ये 660 और ऊपर में 720 740 ये एक इसकी ब्रॉडर रेंज है, और इसकी रिजल्ट 31st को आने वाली है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल ट्राई टू सी अगर ये 740 एटलीस्ट 740 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, सो देयर कैन बी सम गुड न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ चोलाफिन. अनदर गुड एडवांटेज इज द बजाज finance result. This will also have an effect on CHOLAFIN. So this is also, so Bajaj Finance is definitely one of the stocks we will be actively monitoring on Monday. MFSL ये बहुत अच्छी मूव दी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 700, यहाँ से हमने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था, एंड फ्रॉम देयर यू सी इट वेंट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 860. गोइंग फॉरवर्ड में भी इसमें और भी मूव बाकी है, एंड वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच. IOC इसमें भी कुछ खास स्ट्रक्चर हुआ नहीं है. कोल इंडिया हमने अपना प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. यू कैन फाइंड इट व्हेन यू क्लिक ऑन द आई बटन, एंड इट सीम्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पोजिशंस विच आर क्रिएटिंग इन कोल इंडिया. ACC ये इसकी रिजल्ट 31st को आने वाली है. इन जनरल अल्ट्राटेक के बाद सीमेंट सेक्टर की रिजल्ट्स खराबी लग रही है, एंड डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ब्रेकडाउन इन ACC बिकॉज ऑफ दिस अदानी न्यूज़. सो गोइंग फॉरवर्ड this might be so going forward 2200 is definitely one of a very strong resistances, or for now definitely 2000 is a psychological resistance. जब तक ये 2000 के ऊपर नहीं जाती है, there is not much to expect. Godrej consumer products इसकी भी रिजल्ट आने वाली है 31st को, and before that is just going in a nice direction, making higher highs, higher lows, and here you can see it is trying to get past the levels of 940, which seems like a hard target. So we have to wait and see for that. POWERGRID in general ये एक ब्रेकआउट की कोशिश की थी, एंड देन इट मिजरेबली फेल्ड, एंड नाउ इज ट्राइंग टू होल्ड द लेवल, बट इन जनरल आई थिंक फॉर POWERGRID द लेवल्स ऑफ 225 230 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट कैन अगेन करेक्ट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 210. इंडियन होटल ये भी अपना रिजल्ट देने वाली है, एंड बिफोर द रिजल्ट यू कैन सी दैट this 300 is a strong sort of a resistance. 300 के ऊपर, लेकिन in general there is not much hope from Indian hotel before the result. श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस ये भी एक अच्छी फाइनेंस कंपनी है. सो इन जनरल इट्स अगेन स्टक इन अ बॉक्स बिटवीन 1380 एंड 1220 अभी, बिकॉज ऑफ द वीक मार्केट इज ट्रेडिंग नियर द बॉटम रेंज. जिंदाल स्टील इसकी भी is also trading near to its 52 week high, very near to it. So this might be another thing which you might be interested, but in general अभी commodity stocks में मेरी कोई interest नहीं है, and this is also true for Hindustan Copper. So basically this is so from a Hindustan Copper perspective जिसकी result 1st of Feb को आने वाली है. So there are a lot of other stocks which we will be tracking on the budget day, and HINDCOPPER is definitely not one of them. BRITANNIA this is 420 is an interesting level. 420 से ब्रेकआउट करके ये 450 का ही है, अभी इसी रेंज के अंदर है. सो जब तक ये 420 को होल्ड कर रही है, सो देयर माइट बी गुड ट्रेड चांसेस जो ब्रिटानिया दिखा सकती है. इसकी भी रिजल्ट 1 फरवरी को आ रही है. IDFC की भी फर्स्ट को आ रही है, बट दीज आर ऑल रेंज बाउंड. वर्लपूल इसकी भी रिजल्ट 1st को आ रही है. बिफोर दैट यू कैन सी दैट वेरी इंटरेस्टिंग जोन इज 1480 1460. जब तक ये जोन के अंदर ये गिर के घुस नहीं जाती, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. अशोक लेलैंड ये डेफिनेटली इज वन ऑफ द स्टॉक्स, ये मैंने ट्वीट भी किया था. It's definitely one of the stocks which I am keeping in my radar. Going forward, definitely 154 seems like 152 to 154. This seems like a good resistance zone. अगर इसको ये breach कर पाती है, then 160 and 170, which would be its 52 week high. These are definitely possible. Or on a downside, 145 is also a very important zone that it has to maintain. So Ashok Leyland is definitely one of the stocks जो मेरे radar पे है actively. जुबलेंट फूड इसकी भी रिजल्ट 1st of Feb को आने वाली है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी 600 को ये जो ब्रीच किया था तब तक से अभी करेक्ट होके 480 तक आई है. अभी गोइंग फॉरवर्ड देयर इज नॉट मच यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो इट्स ट्राइंग टू रिकवर, बट इट्स ऑलवेज मेकिंग लोअर हाइज, एंड सो द हाई वॉज हियर 560, फिर यहाँ से 540, फिर यहाँ पे 500. इस तरह से लोअर हाइज बना रही है एंड लोअर लोज. गोइंग फॉरवर्ड ये स्ट्रक्चर जब चेंज होगी देन वी वुड बी इंटरेस्टेड, बट इन जनरल यू कैन बी श्योर दैट 600 इज अ टफ रेजिस्टेंस फॉर जुबलेंट फूड फॉर नाउ.
TATACHEM, but डेफिनेटली इसकी रिजल्ट आने वाली है फर्स्ट, एंड दिस वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द स्टॉक्स जो मैं अपने रडार पे रखता हूँ. जुबिलेंट फूड के रिजल्ट पे हमने बहुत बार प्रीवियस ट्रेड किया है, एंड वी वेर वेरी एंड वी लाइक जुबिलेंट फूड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस डेफिनेटली. ओके, गोइंग फॉरवर्ड TATACHEM यहाँ पे 1000 बहुत एक इंटरेस्टिंग लेवल था. यहाँ से ब्रेकडाउन आई, फिर ये 1000 गई, अभी ये करेक्ट करी है. जब तक 1000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, स्पेशली 1025 इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, देयर इज नॉट मच एक्सपेक्ट टू TATACHEM. इन जनरल केमिकल सेक्टर वीक भी है, so we should be looking for opportunities of shorting rather than making long, but definitely अगर आप कोई investor हो, so these are definitely good levels. For 900 is definitely would be a good level for you to add some things in your portfolio for this particular company. 2nd of February, Apollo Tyre आ रही है, and before that is actually stuck in a range. Tata Consumer भी more of a breakdown, but I think these are enough, and we should be tracking more on these particular companies which we discussed for till 1st of February. 2nd of February में जो results आएंगे वो हम next video में discuss करेंगे. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to give you some idea about how to trade and what to trade and what to keep in watch for the next few days. Enjoy your evening, and as always, hope this video was helpful. Bye bye.